Military Power of India, a highly informative video brought to you by Shaurya Bharat Defense Academy and Learning App. Students, India has a huge military power, and in this video, we will understand the military powers of India rest with the Indian Armed Forces. The Indian Armed Forces consists of three wings. These three wings are the Indian Navy, the Indian Army, and the Indian Air Force. Apart from these three wings, there are some supportive organizations that give support to these main wings, और ये supportive organizations हैं Central Armed Police Forces. Under Central Armed Police Forces, we have BSF, Border Security Force, जिसका काम है इंडिया का जो बॉर्डर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ में शेयर्ड है उस बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना. Then we have CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स. इस फोर्स का काम होता है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को पुलिस सपोर्ट देना सो दैट वहां पर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर्ली मेंटेन किया जा सके. देन वी हैव CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स. आप लोग ने कहीं एयरपोर्ट्स पर बड़े ऑर्गेनाइजेशन में या गवर्नमेंट सेक्टर के जो PSUs हैं वहां पर देखा है कि देयर आर सम पर्सनल जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. They are trained personnel from CISF. We have ITBP, Indo-Tibetan Border Police, जो कि प्रोटेक्ट करती है अपना बॉर्डर जो कि तिब्बत के साथ में शेयर्ड है. सशस्त्र सीमा बल एंड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये भी CAPF का ही पार्ट है. अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव असम राइफल्स प्लस इंडियन कोस्ट गार्ड विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन. और इंडियन कोस्ट गार्ड का काम है जो इंडिया के मरीन बॉर्डर्स हैं, कोस्टल बॉर्डर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना. एंड द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस. हाउएवर जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी की, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी rests with the Prime Minister and his cabinet of ministers. Now, the strength of Indian military forces. India has a huge strength of 1.4 million active personnel as on date. And India has second largest military force in the world just behind China. China has 2 million active personnel and India ranks second in terms of number of active personnel. And in terms of budget, the Indian armed forces are ranked third in the world, just after China and America. Now we understand, we get to know some top equipment used by our army. In Indian army, we have battle tanks, we have infantry fighting vehicles, we have armored personnel carrier and troop carriers. So Arjun is our main battle tank. Then we have BMP-2 Sarat as our infantry fighting vehicle. TATA Kestrel is our armored personnel carrier and DRDO Prahaar 510 is the troop carrier. Now in Indian Navy, we have some huge and highly advanced marines and submarines. INS Arihant is our very well known ballistic missile submarine. INS Calvary, INS Sindhu Ghosh are attack submarines. INS Vikramaditya is the aircraft carrier. Then we move on to Air Force. Indian Air Force consists of some very advanced fighter planes, helicopters, attack helicopters. Among fighter planes, main are Sukhoi 30, we have Rafale, we have Tejas, MiG-29, Mirage 2000 and MiG-21. Now, as far as helicopters are concerned, we have CH-47 Chinook, Dhruv, Chetak, Cheetah, Mi-8, Mi-17, Mi-26. Then we have LCH, that is Light Combat Helicopter, Apache, Mi-25-35 and Rudra. These are attack helicopters of our country. And we have MiG-21 which is an interceptor. Now, ये equipments बनते कहाँ पर हैं? तो students, equipments
कुछ इंडिया में बनते हैं एंड सम आर इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर नेशंस। जो इक्विपमेंट्स इंडिया में बनते हैं उनका प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं और 8 PSUs दैट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जिनका काम है डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट बनाना। द 8 PSUs आर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि बनाते हैं एरोस्पेस डिफेंस इक्विपमेंट एंड इट इज हेडक्वार्टर्ड इन बेंगलुरु। देन वी हैव भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एरोस्पेस एंड डिफेंस रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट and it is again headquartered in Bengaluru. Then we have Bharat Earth Movers Ltd. As the name suggests, this is a huge company that builds huge earth moving transport and mining equipment and is again stationed in Bengaluru. Bharat Dynamics Limited BDL, ये बनाते हैं ammunition and missile systems and it is stationed in Hyderabad, Telangana. Then we have Mazgaon Dock Shipbuilders Limited MDL, ये मैन्युफैक्चर करते हैं इंडियन नेवी के लिए बहुत एडवांस्ड वॉरशिप्स एंड सबमरीन्स एंड इट इज स्टेशन्ड इन मजगांव, मुंबई. Then we have Goa Shipyard Limited. This is stationed in Vasco da Gama, Goa and is a shipbuilding company. Then Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि कोलकाता में हेडक्वार्टर्ड है एंड ये बनाते हैं कॉमर्शियल एंड नेवल वेसल्स. एंड फाइनली वी हैव मिधानी विच स्टैंड्स फॉर मिश्रा धातु निगम लिमिटेड, और ये हैं लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मेटल्स एंड मेटल अलॉयज एंड इट इज स्टेशन्ड इन हैदराबाद, तेलंगाना. एंड स्टूडेंट्स, जो हम मैन्युफैक्चर नहीं करते वी इम्पोर्टेड फ्रॉम वेरियस कंट्रीज लाइक रशिया, Israel, France and United States. I think you all are aware that we have imported Rafale from France, we have imported Chinook helicopter from US and the list goes on. So students, this is all about the military power of India. In next series, next episode, we will come out with something new. Thank you.